चलो, so let's see ESG का sharing. Here it is. ESG. Yes. Okay. So as you are aware, 65 marks का corporate governance sustainability है, and 20 marks का risk है, and 15 marks का ESG system. So काफी कुछ है यहाँ पे स्टडी के हिसाब से. Let's understand that. Yeah. Lesson 1. Lesson 1 काफी लोगों को काफी कुछ कहना है. So things that you must do. एक तो एक elements and scope of corporate governance mark करके रखो फटाफट. Elements and scope of corporate governance. Okay. Then IFRS sustainability disclosure standards क्या रहेंगे? IFRS sustainability disclosure standards. Okay. About CSRD. CSRD. Okay. That you have to do. Then European sustainability standards क्या है? European sustainability standards. Okay. Then this Shanti Parva क्या था? What was the Shanti Parva? And Arthashastra क्या है? What was the Shanti Parva and Arthashastra? Okay. Then roots of corporate governance in Indian ethos. Roots of corporate governance in Indian ethos. Okay. Then, okay. Sorry, I forgot to ask you. आपने book लेके आया क्या? ESG की book आपके हाथ में है कि नहीं? Sorry, I forgot to ask you that. Okay. Fine. So I'm continuing again for the first chapter. Elements, IFRS, about CSRD, European, Shanti Parva, Arthashastra, roots, stages of development in the USA. Okay. Then SEC proposal on climate-related disclosures. SEC proposal on climate-related disclosures. Okay. Corporate governance principle recommendation of Australia. And 8 central principles. Okay, 8 central principles of Australia. Then new code of corporate governance for Singapore. The new codes of corporate governance for Singapore. Okay, OECD principles of corporate governance. OECD principles of corporate governance. Clear? Then diversity of board of directors and gender-based balance of board of directors. Diversity and gender-based balance in Finnish corporate governance board of directors. Okay. This Bucharest Stock Exchange Corporate Governance 2025. Okay. Yeah. National Foundation for Corporate Governance, NFGs. Yeah. International Corporate Governance Network. International Corporate Governance. Okay. The Asian Corporate Governance Association. Yes. Asian Corporate Governance Association. Perfect. So ये chapter से इतना ही है. एक बार फिर से देख लो. Elements, IFRS, CSRD, European, Shanti stages.
Clear? Fine. Coming to chapter number 2. Chapter number 2, basic requirements of corporate governance. Corporate governance in unlisted companies that you have to read. Corporate governance in unlisted companies that you have to read. Appointment of chief risk officers. Appointment of chief risk officers that we have to read. Okay. Rotation of partners of statutory audit firms. Fit in proper directions वगैरह के हिसाब से rotation of partners. Then compliance and reporting requirements. Compliance and reporting requirements. Okay, guidelines of CSR for CPSCs. Okay, for CPSCs, ये वाला. एक मिनट. It should be this. Guidelines for CSR for CPSCs. हाँ, ये वाला. Okay, so these are the requirements of chapter 2. Corporate governance in unlisted, appointment of CSR, compliance in CPSCs. Okay. Then chapter 3. Chapter 3 बहुत famous है, सब लोगों को काफी मालूम है. What do you mean by board composition? What do you mean by board composition? Okay, Regulation 17 and board independence. Regulation 17 and board independence. Then indicative definition of independent director by International Financial Corporation. Okay, this definition by independent director. Then Finnish Corporate Governance Code 2029. ये बात. Tenure of the independent directors, maximum attendance, and reappointment as per the proxy. The international perspective, the Malaysian Code of Conduct, Vietnam Code of Conduct. Then independent director appointment, reappointment and removal. Okay. And appointment of independent director, yes. Appointment of independent director by LODR provisions. Appointment of lead independent director. Role of the lead independent director. And international perspectives. Okay, compliance declaration and yes, declaration of independence. Review and performance of the non-independent director. Performance evaluation of board and management. Evaluation of chairperson of the board. The code of corporate governance in Singapore.
Yes, Malaysian Code of Conduct for this thing is there. Vietnam Corporate Governance Code पढ़ लेना. And exemption of Indian scenario. Duties and responsibility of directors. Directors independent. Reduction of number of directors 165 Penalties for number of directors 165 Okay, occupying officers. Private company provide other grounds. Okay, corporate governance practice to 2019. Appointment of promoters by the central government. Special notice for removal of appointment. Compensation to directors and separation of role. Singapore Corporate Governance 2018. Malaysian Corporate Governance Code 2021. Okay. Italian Corporate Governance Code Succession Planning. Related party transactions, meaning Finnish corporate governance rules. Yes, Finnish corporate governance rules. Meaning of insider trading regulations. Okay. Board of fair disclosures and things. ओके सो ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है 6 चैप्टर के साथ मर्ज्ड है पूरा ये पार्ट एज यू कैन सी बोर्ड कॉम्पोजिशन रेगुलेशंस एलओडीआर इंडिकेटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेफिनेशन प्लस फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कोप ओके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अटेंडेंस बोर्ड्स इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स देन कंपनी लॉ के हिसाब से अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होता है एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है इस पे regulations, performance evaluations, and nothing.
ओ मार्किंग कर ली सबने, ठीक है चलो। नेक्स्ट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ये वाला चैप्टर तो सबको अच्छे से आता है। व्हाट इज SS1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ SS1, ओके, एंड स्पेशल एक्ट्स, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ 118 सबसेक्शन 10, board processes through SS1, मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। हो गया ये चैप्टर में, बस इतना ही काफी था। And board committees, the need for the committees, okay, selection of committee members, appointment of committee chairman, constitution of audit committee and number of directors, and provisions of LODR, eligibility for appointment of directors, constitution of NRCs, regulation 19.3, a number of meetings and all the same. Stakeholder relationship committee, penalty for contraventions, composition, display of CSR policies, chairman policy, quorum regulation 23, power of RMC, ओके। सो ये चैप्टर में से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बोर्ड कमिटीज में नीड ऑफ कमिटी, सिलेक्शन ऑफ कमिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, minimum number, auditors appointment, eligibility requirement, constitution of nomination committee, stakeholders, penalties, chairperson, okay, display of so yes, गुड। बाकी चैप्टर 6 तो मर्ज है, चैप्टर 7 के हिसाब से कंसेप्चुअली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी बता देता हूँ। सो एक तो ये फैमिली बिजनेस इन जर्मन जापान फॉर लॉन्गेटिविटी का तरीका क्या है, मैरिको की केस स्टडी पर्सनलाइजिंग द बोर्ड, ओके, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर लेसन राउंड ऑफ प्लान, okay. So that has to be seen. Okay. तो चैप्टर 7 में इतना ही है। यस, चैप्टर 7 में इतना ही है। चैप्टर 8 बोर्ड डिस्क्लोजर्स एंड वेबसाइट्स, अगेन छोटा चैप्टर। इसमें एक्चुअली अपने को बोर्ड रिपोर्ट ही करनी है। ओके, बोर्ड रिपोर्ट का जितना भी डिस्क्लोजर्स है बस वही करने का है। Okay? और ये करके जाने का, अब्रिज बोर्ड रिपोर्ट फॉर ओपीसी इन स्मॉल कंपनीज,
ओके, बाकी ई सॉफ्ट वगैरह देख के चले जाना सब, इसके साथ ही जाता है। वेबसाइट पे डिस्क्लोजर्स। सो बोर्ड रिपोर्ट ही इसका मेन एरिया है डिस्कशन का, एनुअल रिपोर्ट के कंपेयर में इस बार। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, एवरेज रिपोर्ट क्या होता है, ओके, वेबसाइट्स में क्या डिस्क्लोजर होता है वो समझो। डेटा गवर्नेंस, एग्जैक्टली। सो डेटा गवर्नेंस के चैलेंजेस जो यूजुअली देखने को मिलते हैं। डेटा गवर्नेंस इंडियन सिनेरियो में कैसा है, क्या है? ऑब्जेक्टिव और डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। देन ओईसीडी कनेक्टेड ऑटोमोटिव व्हीकल्स की स्टडी, एक बार एक पढ़ के देख लेना। इमर्जिंग अप्रोच। So hospitality sectors, best practices for data governance, data securities. Then information technology, rules के हिसाब से क्या करें। Artificial intelligence, OECD rules. Yes. So डेटा गवर्नेंस में याद रखना, डेटा गवर्नेंस ये सारे उसके चैलेंजेस हैं, प्लस उसके साथ डेटा गवर्नेंस गवर्नमेंट लेवल पे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए रूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है। स्टेक होल्डर्स राइट्स। पार्ट ए था, दैट इज विसल विजुअल विक इन्वेस्टर्स मैकेनिज्म के हिसाब से। ओके, सो ये पूरा पार्ट देख लेना। देन कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट, कारो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। कनाडा और यूके में विसल ब्लोइंग का रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया में क्या है। सम विसल ब्लो केसेस इन इंडिया। Chief whistleblowers, judicial response, occupational safety records, reduced cost of insurance premiums,
एम्प्लॉय टर्नओवर एट्रिशन रेट्स क्या होता है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल इम्पैक्ट क्या होता है, इज जेंडर पैरिटी सेम थिंग एज जेंडर इक्वालिटी, व्हाई डज वर्कप्लेस जेंडर इक्वालिटी मैटर्स, फिर सप्लायर्स प्रैक्टिसेस क्या रहते हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशली ये सप्लायर्स को, लेबर एंड ह्यूमन राइट्स रिक्वायरमेंट्स, ethics and compliances, make in India purchase. So ये वाला part देख लेना, that comes in chapter C, stakeholders rights, whistleblower का mechanism, कारो का order, UK, Canada और ऑस्ट्रेलिया में whistleblowing कैसे है, whistleblowing के कुछ cases, judicial response, OHSC, that is occupational health safety, cost of insurance, and उसके impact. Okay, business ethics and code of conduct. Okay, so what is ethics? And what do you mean by business ethics? Standard of ethical practice one should adopt. Ethical dilemma. Okay, how do you address ethical dilemma? Steps involved in ethical dilemma. ये पूरा ही पढ़ लो चलो. Difference between code of ethics and code of conduct. Anti-corruption, bribery and corruption global scenarios. Okay. Okay. Then next thing could be punishment for habitual offenders and matters to be taken for consideration fixation. Fines. Power to inspect bankers' books. Previous sanction necessary for prosecution. Appeals and revisions, section 27. Lokpal. Lokpal. So ये चैप्टर में ये सब चीजें ही देखनी. एथिक्स क्या है, एथिक्स स्ट्रक्चर्स क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, एंटी करप्शन, ब्राइबरी लॉ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जैसे सेक्शन 9 हो गया ऑफेंस, पब्लिक सर्वेंट का ऑफेंस, मैटर्स टू बी टेकन, पावर्स टू इंस्पेक्ट वर्क, सैंक्शंस, अपील्स, लोकपाल लोक अदालत एंड आईसीआईसीआई ब्रांड.
Then we go to chapter 12. That is what constitute ESG. ESG रिपोर्टिंग एंड इन्फो, बस ये दो चीजें दी, बस ये दोनों. एक पढ़ के जाना, exemplary approach of Indian companies for this. Commercial Energy Conservation Act and significant changes. S&P Global so-and-so. So इसमें इतना ही देखने का, एग्जाम्पलरी एक तो इंडियन अप्रोच क्या था, ओके, कमर्शियल एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट, एसएनपी की रिपोर्ट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके स्कोप, ट्रांजिशन एंड हाउ विल इट वर्क. CSR, that I would say. ये तो आपको CSR इलेक्टिव में जो पढ़ा था ना, वो पार्ट ही पूरा पढ़ लो, दैट्स इट. That will be sufficient. Green initiatives, yes. Chapter 15. Renewable energy. Yes, renewable. Okay, waste management, forms of waste management. Standard producer responsibility. The European Green Deal and the benefits. GRI environmental standards. So ये चैप्टर से ये चीजें देखनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड यूरोपियन ग्रीन डील. And governance influence. Language property. Proxy acknowledgement. So ये चीजें देखनी है. इसके अंदर से एक तो ICS है, सेक्युलर ऑडिट, प्रॉक्सी एडवाइजर्स का पूरा कंसेप्ट और ESG इन्वेस्टमेंट्स का पूरा कंसेप्ट. Done. Chapter 17. कंपनी सेक्रेटरीज के ऊपर.
how different from government? तो जिसमें आप ये ग्रैंड थॉट एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एट फिट फॉर फ्यूचर ये पढ़ सकते हो. रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन ईएसजी. ओके. रिस्क मैनेजमेंट. वैसे तो कहूंगा ये डू इट फुल चैप्टर आई वुड से. ये 20 मार्क्स का, इसमें रिस्क हम नहीं ले सकते रिस्क मैनेजमेंट. ओके. हाँ, 19-20 चैप्टर में इसमें मैं आपको बताता हूँ. एक तो ये पार्ट. Waiting, HTTP. So 19 चैप्टर में ये पार्ट देख सकते हो. सस्टेनेबिलिटी ऑडिट, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, मीनिंग ऑफ ESG रेटिंग्स एंड द वे. Okay. And 20th chapter. Yes.
तो इन पार्ट को देख के याद रखना 20th चैप्टर में। एक तो इंटीग्रेट रिपोर्टिंग के चैलेंजेस और बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ डू यू एक्सेस जीआरआई रिपोर्ट्स, उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह, बीआरआर और बीएसआर के कंपैरेटिव स्टडीज क्या थी, और बीआरएसआर